Good morning, students. Today in GK, I am going to explain you the chapter number 43. It's all about the forts of India. Now, India is a land of ancient forts and monuments which describe its depth or deep manifested past, isn't it? And some Indian forts were mainly constructed for defense purposes. यानी वो किस लिए किया गया था create? For defense purposes. Some fortresses were built to display power and authority. कुछ फोर्ट्स आपने देखा होगा कि वो क्या दिखलाता है किसी का कि कितना पावर है उसके पास और कितनी अथॉरिटी है. For that also the forts were created or built. Created we can say it built. Forts were built mainly to protect the capital city of the kingdom. And another thing is also there. ये किस लिए build किया जाता था? To protect the capital city of the kingdom. India is well known for its magnificent forts, isn't it? Already I told you this. Descriptions of some Indian forts are given below. यानी आपको यहाँ पे Indian forts के कुछ descriptions दिए गए हैं and you have to fill their names with the given clues. Okay, so let's start with this chapter. First one here it is. This fort city on a steep granite hill in Andhra Pradesh was once the capital of the Qutub Shahi kings. यानी ये क्या है आपका? ये फोर्ट सिटी है स्टिप ग्रेनाइट हिल, ग्रेनाइट का बना हुआ है एंड दैट इज ऑल्सो इन द आंध्र प्रदेश एंड इट वॉज द कैपिटल ऑफ द कुतुब शाही किंग्स. एंड द हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट डेट्स बैक टू द अर्ली 13th century. So which fort it is? Golconda Fort. So you will mark it here one number and you will fill it here Golconda Fort. Golconda Golconda Fort. Fort. Okay. Now move on to the second number. Second it is telling this fort was built on the hilltop. यानी hilltop पे by Raja Man Singh Tomar in the 15th century. कब हुआ था ये build? In the 15th century. It was from this place that Rani Lakshmi Bai of Jhansi fought the British soldiers. जो रानी लक्ष्मी बाई थी उन्होंने किसके अगेंस्ट में फाइट किया था? ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट में. एंड फ्रॉम दिस प्लेस ओनली शी फॉट. सो व्हाट इज दैट प्लेस नेम? ग्वालियर फोर्ट. So you will mark it there in the Gwalior Fort 2 number and you will write it down here Gwalior Fort. Gwalior Gwalior Fort. Fort. Gwalior Fort. Third number in this fort is one of the very few forts which was still populated. कहते हैं इसकी population बहुत ज्यादा थी. It is situated in Rajasthan. ये कहाँ situated है? राजस्थान में. तो जैसे ही नाम राजस्थान का आता है आपके दिमाग में आता होगा जैसलमेर फोर्ट, isn't it? So you will write it down here. This fort name is Jaisalmer. Jaisalmer. Jaisalmer Fort. Fort. Fourth number. This fort was built near the river Kaveri. ये किसके पास में बिल्ड किया गया था इस फोर्ट को? रिवर जो है हमारा कावेरी, वहां पे. इट वॉज लेटर रिनोवेटेड बाय टीपू सुल्तान हु रेसिडेंस कॉल्ड लाल महल वॉज सिचुएटेड विद इन द फोर्ट. और इसे बाद में रिनोवेट करना यानी इसमें कुछ चेंजेस करके उसे फिर से दोबारा बनाना किसने किया था? बनाया टीपू सुल्तान ने. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी लाल महल. ये रेसिडेंस कहाँ पे सिचुएटेड है? इस फोर्ट के अंदर ही, जिसे हम क्या कहते हैं? लाल महल. सो विच दिस फोर्ट इज? इस फोर्ट का क्या नाम है? श्रीरंगना पट्टनम फोर्ट. श्रीरंगना. सो यू विल राइट इट डाउन हियर SRI श्रीरंगा RANGA श्रीरंगा पट्टनम फोर्ट PATNAM पट्टनम फोर्ट FORT. श्रीरंगना Patnam Fort. Fifth number it is, the Jama Masjid situated in this fort is unique in India.
जो जामा मस्जिद है, जो फोर्ट है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है एंड इट हैज अ ह्यूज डोम कवरिंग द होल एरिया, 4 smaller ones at the corners and 75 smaller still all the way around. 4 तो छोटे छोटे कॉर्नर्स के पास में है, लेकिन 75 क्या है उसके आसपास घिरे हुए हैं. The fort itself has 15 towers. इस फोर्ट में ही कितने टावर्स हैं? 15 towers. So which fort it is? Gulbarga Fort. So you will write it down here. Gulbarga Gulbarga Fort. Fort Gulbarga Fort. Next comes the 6th number. This fort was rebuilt by Akbar when he took it over from the Lodis. Later Shah Jahan built many exquisite structures like Moti Masjid inside this fort. ये मस्जिद किसने बनाया था? अकबर ने. And this later on it was built by the Shah Jahan and was given a structure like the Moti Masjid inside this fort. So what is the fort name which is created like this? That is the Agra Fort. So you will write it down here. AGRAFORT. Agra Fort. Next comes the 7th number. This fort was built in 1187 by a Yadva king. ये फोर्ट किसने बनाया था? यादवा किंग ने. Later, Muhammad Tughlaq tried to shift his capital here from Delhi. जो मोहम्मद तुगलक था वो क्या किया? अपना कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली से. कहाँ पे? इसी फोर्ट पे. सो व्हाट इज दैट फोर्ट नेम? दौलताबाद फोर्ट. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. दौलत DAULATA दौलताबाद फोर्ट. BAD बैड FORT दौलताबाद फोर्ट. नेक्स्ट कम्स द 8th number. This fort now stands at the place where once the capital of the Pandavas. किसका कैपिटल था? पांडवास का. The original city of Delhi was situated. This fort was originally surrounded by a moat which was fed by the river Yamuna. ये आसपास जो एरियाज थे कवर अप किससे करता था? रिवर यमुना. So which fort it is? पुराना किला. So you will write it down here. PURANA पुराना किला. QUILA पुराना किला. Next comes the 9th number. It is situated at Bundi, the capital of a major princely state during the heydays of the Rajputs. राजपूत के टाइम से. This star fort built in 1354 has the Bhim Burj, the largest of the battlements on which it is mounted a famous cannon. एक फेमस कैनन इस पे बिल्ड किया गया था, बनाया गया था. एंड दिस फोर्ट नेम इज तारागढ़ फोर्ट. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. TARAGARH तारागढ़ फोर्ट. FORT तारागढ़ फोर्ट. 10th number. One of the finest examples of military architecture in South India. This fort is a perfect specimen of a water fort. ये आपको एक लुक देगा एक वाटर फोर्ट का. सो व्हाट इज द फोर्ट नेम हियर? इट इज वेलोर जाला ड्रग. सो यू विल राइट इट डाउन हियर. VELLORE वेलोर जाला JALA जाला ड्रग DURG वेलोर जाला ड्रग. सो you have to learn this chapter also. Now we are going to move on to the chapter number 47. Musical instruments. How many are interested in listening to music? Everyone. सभी लोगों को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, isn't it, right? Everyone loves to listen music. And this, you also might be knowing this, or some of us might not be knowing that the music, it improves memory, isn't it? It improves memory. It also improves so many other cognitive and physical aspects of the human body.
Okay, learning a musical instrument not only sustain and feeds the brain, but also it improves the memory. Yes, it improves the memory also. And any musical instrument, it can be a device which is adapted to make musical sounds. यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो क्या बना रहा हो, म्यूजिकल साउंड्स बना रहा हो, दैट इज नोन एज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. And a person who plays a musical instrument is known as an instrumentalist. Instrumentalist. He is a person who plays musical instruments. And Johann was a German musician, teacher and singer, but is best known as the father of the man who changed the music forever. So we all love to listen to music. So we are going to see what are the musical instruments और उसके different sounds होते हैं, isn't it? And we love to listen this. So let us do this. Some of the you have to fill here crosswords with the help of the hint given below. So let's start. Here the first one in cross we will fill it. First one. Lord Krishna is depicted standing cross-legged and playing this musical instrument. अब Lord Krishna कौन क्या play करते थे? Yes, it is flute. So where you have to fill it? One number. So you will write it down here. F. It is written here. L-U-T-E. Flute, isn't it? Second number. A large musical instrument inside which small hammers hit the metal strings to produce sound. यानी क्या होता है, एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक छोटे छोटे हैमर्स लगे होते हैं जो हिट करता है मेटल को, और उसी की वजह से क्या होता है, आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं. सो व्हाट इज दैट? पियानो. सो यू विल राइट इट डाउन, पियानो इन सेकेंड नंबर. सो यू विल राइट इट डाउन हियर, P-I-A-N-O, piano. Third number it is a musical instrument with keyboard and closely plated bellows. ये किस में होता है? एक DN में. So you will fill it here in the third number. A-C-C-O-R-D-I-O-N. accordion में होता है ऐसा. Fourth number. A traditional musical instrument played especially in Scotland. कहाँ प्ले किया जाता है इसे? स्कॉटलैंड में. It is played by blowing air through pipes into a bag held under the arm. आप सभी लोगों ने कभी देखा होगा ये चीज, बैग टाइप का उसका बना होता है और उसी से क्या होता है, पाइप एक सामने पे लगा तो उसमें ब्लो करते हैं क्या हम लोग, एयर, और उसकी वजह से क्या होता है, साउंड उससे बाहर आती है. सो व्हाट इज दैट? बैग पाइप्स. सो इन फोर्थ नंबर वी विल फिल इट बैग पाइप्स. Fourth number, B-A-G, bag, P-I-P-E-S, bag, pipes. Fifth number, a musical instrument in the form of a round metal plate. एक round metal plate type का होता है. It is hit with a stick. Stick से उसे hit किया जाता है और a pair of it are hit against each other. आपस में भी एक दूसरे से उसे क्या किया जाता है, हिट किया जाता है. सो व्हाट इज दैट? सिंबल. सो यू विल राइट इट डाउन इन द फिफ्थ नंबर, सिंबल. सो फिफ्थ हियर इट इज CYMBAL. Sixth number, Goddess Saraswati is always seen with this musical instrument in her hands. आप सभी लोगों ने देखा हो ये चीज. What is that? Veena. Yes. Sixth number we will fill it here. Veena. V-E-E-N-A. Veena. Now we will come to the down. So seventh number, a small 4-string guitar-like instrument. ये गिटार के टाइप का इंस्ट्रूमेंट दिखता है, which originated in Hawaii. So what is that instrument name? Ukulele. So you will fill it here in seventh number. U-K written here. U-L-E-L-E. Now eighth number. The balls of Bengal are associated with this old musical instrument. So what is that instrument known as? Ek tara. So you will fill it here in eighth number. Ek tara.
So here it is written here, E written already, K T A R A. It is completed here. Next, 9th number, an ancient musical instrument with strings fastened in a frame shaped like U. यानी आपका क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका जो फ्रेम है वो किस शेप का रहेगा, U. A large Australian bird is named after it. What is that bird name? Lyre. So you will fill it here in this 9th number L. I've already YRE written here. Now next 10th number. It is said that Nero played this musical instrument while Rome was burning. जब रोम बर्न हो रहा था तब इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्ले किया गया था. व्हाट इज दैट? फिडल. सो इन 10th नंबर यू विल फिल इट एज फिडल. FIDDLE, fiddle. 11th number. This musical instrument was earlier known as Sahatara, invented by Amir Khusro. ये किसने इन्वेंट किया था? अमीर खुसरो ने. So what is that? Sitar. So in 11th number you will fill sitar. Here it is SITAR, sitar. 12th number, a musical instrument with metal strings. कौन सा? metal string के साथ usually 8 arranged in pairs. कैसे arrange है ये? pairs में. So what is that? Mandolin. So in 12th number you will fill it mandolin. So here it is MANDOLIN, mandolin. So what you have to do is you have to learn both the chapters and you have to fill both the chapters in your book. So that's all for today. Thank you.